Chalo. So last class we done the purely capacitor done, right? We are doing the numericals based on this. Correct. A capacitor 1 microfarads is connected to AC source of EMF E is equal to 250 sine 100 pi t. Write the equation of instantaneous current and the reading of the AC ammeter connected to the circuit. Well, indirectly, we have to find instantaneous current. I we have to find. Microfarad is nothing but capacitor, right? So nothing but one capacitor is there, one voltage source is there. So we given E is equal to 250 sine 100 pi t. This is 1 microfarad. I want instantaneous current is how much? I. And you already know that वोल्टेज का फेज कितना दिख रहा है अभी 100 पाई टी दिख रहा है. करंट कितना होगा? करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, राइट? लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 मींस व्हाट यू हैव टू फाइंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन 100 पाई. सी जो भी फेज है वो डाल दो पहले 100 पाई टी सिंस इट इज लीडिंग बाय प्लस पाई बाय 2. नो सॉल्व. I नॉट फाइंड करो, then substitute here and get the answer. Sir, is 250 V naught or VRMS? 250 is nothing but we can compare with this one. E is equal to E naught sine omega t, right? So E naught is a peak value. V naught. So it's 2.5 into 10 power 6 by pi sine 100 pi t plus pi by 2. So you found XC, huh? Yes, sir. 10 power 6 into 2.5 by pi. Okay, we'll see. I not calculate karo, Patrick. I naught in the formula is what? In the capacitor mein, I naught is equal to V naught by XC. Ohm's law V naught by R नहीं रहेगा कैपेसिटर में, XC रहेगा. And XC is omega L. खत्म. V naught is 250 by omega is 100 pi. Okay, sorry. Yes, capacitor na. XC is 1 by omega C, right? 1 by omega C. 1 by omega C. Right? XC है ना, XL नहीं है ना. हाँ. तो सबसे करो 1 by omega is how much? 100 pi into capacitor. Capacitor is 1 microfarad means 1 into 10 power minus 6. No, ये सब कुछ आ गया तो I नॉट आ जाएगा. सॉल्व करो. अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? सो ऊपर गए तो nearly 75 milliamperes. 35, हाँ 75 milliamperes. हाँ अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा. सो 0.075 ऐसा कुछ आएगा. ओके. सो 10 power 6 by into 100 pi, right? So approximately आपको 0.078 आएगा. तो substitute I नॉट के जगह में this one. So answer is कितना था? I is equal to 0.078 sin 100 pi t plus 5 by 2. This I is called instantaneous current. Okay, here E is called as instantaneous voltage. Okay, चलो करो. Capacitor has a reactance XC, the given as 100 ohms. This much hertz में what will be reactance of 250 125 hertz?
20. 20 units are what? Uh, what, ohms. Reactance is nothing but ohms only. But 20 wrong. How much? So is it 40? Yes, 40. Very good. Super. So we know that XC is equal to 1 by omega C What? and 1 by 2 pi FC. That means inverse relation. Na? So X2 by X1 is equal to F1 by F2 because 2 is the 1 aega, 1 is the 2 aega, inverse relation. Now X2 we have to find by X1 is 100. Frequency first 50 by F2 is 100. So now solve करो इसका x2 is equal to 50 into 100 by 125. So 25 5 is a 25 2 is a so 540 ohms. Okay, sure. Now we finished R separately, L separately, C separately. Okay. Now we are seeing the combination जाने वाला है. कौन सा? LR circuit जाने वाला है. Okay. चलो. LR circuit, inductor resistance circuit. Now inductance circuits में आपको मालूम है resistance, inductance. I am giving the voltage V is equal to V naught sin omega t. Here phase कितना है? Omega t is a phase, right? Our intention calculate the current. Current is how much? Okay. Now if you see individually, if I in the purely resistance में क्या बोल रहा है? Current and voltage are in the same phase. Voltage across resistance are in the same phase. Purely resistance में. Similarly, purely inductor में voltage क्या करेगा? Current I am taking x-axis. Voltage क्या करेगा? Inductor में क्या होगा? Current lags voltage पे pi/2 and voltage leads current पे pi/2, right? So ये वाला leading. Purely inductor I am talking about. Now क्या होगा? ये बोल रहे हैं current lags voltage by pi/2. ये बोल रहे हैं current should be in phase. Okay. Then finally क्या होगा? Finally current lags by pi/2 होगा? नहीं होगा ना? Because ये बोल रहे हैं सेम फेज में आ जाओ करंट को. ये बोल रहे हैं नो नो लैगिंग है, लैगिंग करो, pi/2 लैगिंग करो बोल के. द रिजल्टेंट विल बी लैगिंग ही होगा फाइनली, बट सम एंगल फाइव एंगल में होगा फाइनली. ओके, सो इट इज नॉट pi/2, इट इज 5. ओके, सो इसका डायग्राम देखेंगे. आई एम टेकिंग द रेफरेंस. I am drawing for voltage across the resistor, which is in the same phase, right? Voltage across the resistor and current are in the same phase. And similarly, I took a reference, right? Voltage of the inductor will be in the upward direction. Voltage across the inductor will be upward direction. So in दोनों का resultant is nothing but net voltage. V net voltage. And this is angle phi. Angle phi. Now this में आपको RMS भी true है, peak value is also true है, instantaneous value also same true only in this diagram में. But first we will draw the for a peak values. Peak values में we are trying to find. Our intention is what? Current को and उसका जो भी इसको इसमें क्या आएगा? Reactance नहीं आएगा, impedance आएगा. Whenever combination में Z आएगा, okay? Z बोलते हैं, no problem. So आपको Z find करेंगे इसका, okay? देखो, सो मैं क्या करूंगा, इसका पीक वैल्यूज लर्न करेंगे. वी आर नॉट बोलेंगे, वी एल नॉट बोलेंगे, इधर वी नॉट बोलेंगे. दीज आर द पीक वैल्यूज. दिस डायग्राम इज ट्रू फॉर आरएमएस वैल्यूज आल्सो, पीक वैल्यूज आल्सो, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आल्सो. दिस डायग्राम, राइट? वी आर टेकिंग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का विड्रू, इंडिविजुअल इंडक्टर का विड्रू, एंड दोनों को नेट वोल्टेज वी गॉट दिस वन वी नॉट. ओके, सो नीचे लिखो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 5. Current lags voltage by 5. Okay. Now इसका देखो आप net voltage we are trying to find by using parallelogram law. Tell me, this is 90 degrees, right? So V naught square is equal to VR naught square plus VL naught square. Okay. So V naught square is equal to what is voltage across the resistor is I naught into R.
होल स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आई नॉट इंटू क्या डालो V इक्वल आई आर राइट. इंडक्टर में R नहीं रहेगा ना, XL रहेगा. आई नॉट इंटू XL होल स्क्वायर. So I naught square I am taking common R square plus XL square. So V naught square. Therefore V naught is equal to और अंडर रूट में I naught बाहर आ जाएगा. I naught into अंडर रूट R square plus XL square. See, can you guess current कितना आएगा? Tell me current कितना आएगा? It is angle phi right? Current lags voltage by phi. So क्या आएगा? I naught sin ओमेगा टी माइनस फाइव. ये तो आ गया, करंट तो आ गया, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं कर रहा है. बाई फाइव एंगल फाइव में आ गया. नाउ हमारा इंटेंशन क्या है? इंपेडेंस वगैरह फाइंड करने के लिए वी आर डूइंग. ओके, नाउ हियर आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट फ्रॉम दिस? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर. नाउ इफ यू सी केयरफुली इट इज लुकिंग लाइक वी नॉट बाई आर जैसे है ना, ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर जैसे ना. सो दिस इज एक्टिंग लाइक ए इंपिडेंस बोलते हैं इसको, इंपिडेंस बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. देयरफॉर अभी से व्हेनेवर कॉम्बिनेशन इज देयर आपको आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड यूज करेंगे, वेयर जेड इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. खत्म. आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दिस इज द इंपिडेंस बोलते हैं. लिखो सर इंपिडेंस. okay, so and this is true for VRMS also. IRMS is equal to what you will get? IRMS is equal to VRMS by Z. All are right only. अगर RMS भी देते तो RMS का यूज करो, पीक करंट का बोलते हो V नॉट बाय Z यूज करेंगे. And we'll convert this triangle into impedance triangle. That also will help you to find the angle phi वगैरह and find करने के लिए आपको वो impedance triangle पे कन्वर्ट करेंगे. देखो VR naught is nothing but I naught into R, VL naught is nothing but I naught into XL, and V naught is nothing but I naught into Z, right? I naught get cancel. So net देखो net resistance will be like this. R क्या net reactance is inductance का XL रहेगा and net impedance is Z रहेगा. Okay, so therefore this triangle is phi. So what is Z is equal to under root R square plus XL square, and tan phi is what? Tan phi is equal to opposite by adjacent. Opposite is XL by R, right? Opposite by adjacent. XL by R. This is the angle find करने के लिए useful होगा. Tan phi is equal to XL by R. तो impedance triangle बोलते हैं उसको. लिखो उधर ऊपर में impedance triangle. That will help you to find the angle phi. कितना एंगल में आपको लैगिंग होगा, that we can find by using this impedance triangle. सो अभी एक जगह में लिखेंगे सब कुछ अभी, सो दैट आपको इजी हो जाएगा. फिनिश्ड. देखो मैं एक समरी लिख रहा हूँ. इन आरएल सर्क्यूट में आर, इंडक्टर में एल, हियर वोल्टेज आई एम गिविंग V is equal to V naught sin omega t. Okay, now here you tell me what is the voltage we got? V is equal to V naught sin omega t we are giving. So current कितना होगा? Current finally lagging होगा but angle phi. So I naught sin omega t minus phi. So you got current also, right? Now what is VR naught? Tell me. VR naught, voltage across the resistance कितना होगा? I naught into R. Voltage across the inductor, purely inductor, I naught into XL. Now current तो मालूम है. Okay, now see I am trying to find the voltage across the resistor and voltage across the inductor also.
नाउ वोल्टेज टर्म्स में लिखेंगे वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। नाउ देखो करंट के साथ सेम फेज में रहेगा प्यूरली रेसिस्टर, सो करंट का फेज कितना है ओमेगा टी माइनस फाइव, सो रेसिस्टेंस का वोल्टेज में आपको यही फेज कॉपी करने का, सो वी आर नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वी आर एंड वी एल ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड। करंट इज पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, रेसिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, दैट्स व्हाई करंट का फेज जो आया दैट सेम फेज विल बी द रेसिस्टेंस में भी सेम फेज आएगा। ओके, नाउ इसमें क्या होगा, नाउ करंट इज पासिंग थ्रू द इंडक्टर आल्सो, नाउ क्या होगा वोल्टेज क्या करेगा इंडक्टर में, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू, इंडिविजुअल इंडक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, सो ये करंट से प्लस पाई बाय टू आएगा, सो करंट का फेज ओमेगा टी माइनस फाइव, सो वी एल नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो करंट का वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू राइट, प्लस पाई बाय टू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर तक करेगा बट इंडिविजुअल बोलने से अब वो यो बोलेगा, ऐसा नहीं है। वी आर वेन आवर करंट को यू गॉट एंगल फाइव लैगिंग होगा, दैट सेम करंट इज पासिंग थ्रू रेसिस्टर इंडक्टर में, रेसिस्टर में क्या होगा सेम फेज है, दैट्स व्हाई ये दोनों कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड इंडक्टर में इट इज लीडिंग बाय पाई बाय टू, दैट्स व्हाई प्लस पाई बाय टू डूइंग। ओके, इसी बेस पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इसी बेस पे फॉर्मुलास लगा के सॉल्व करना पड़ेगा अभी। ओके, एंड इंपेडेंस ट्रायंगल मालूम है ना, इंपेडेंस ट्रायंगल इधर लिख देंगे, इधर आर, ये डायग्राम याद रखने का, वी एल और एक्सएल, ये वाला जेड एंड एंगल फाइव, एंड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड tan फाइव इज ऑपोजिट बाय एक्सएल बाय आर। इंपेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, एंड जेड का यूनिट्स आल्सो वन ओनली, जेड का यूनिट्स आल्सो वन ओनली। एंड कभी भी ओमेगा फाइंड करने के लिए आपको सोर्स वोल्टेज देखो, सभी सब कुछ मिल जाएगा, बी नॉट भी मिल जाएगा, ओमेगा भी मिल जाएगा कंपैरिजन में। चलो नाउ विल डू द न्यूमेरिकल्स। हाँ करो, तो ये इंडक्टर का मिक्स कर दे, देखो a coil of resistance 300 ohms, inductance 1 Henry is connected across the alternating voltage 300 by 2 pi. Frequency they given as 300 by 2 pi. Phase difference, calculate the phase difference between the voltage and current. मतलब 5 चाहिए, 5 का क्वेश्चन मार्क, 5 करो। So whenever 5 is there, you can use the help of impedance triangle. So tan phi is equal to XL by R. XL तो दिया नहीं, इंडक्टेंस दिया है, L दिया है ना, so omega L by R. So omega is nothing but 2 f frequency दिया ना, 2 pi f L by R. So it So is substitute कितना? 45. Yes, per frequency. So all values if we substitute, देखो f is there, L is there, R is there, phi is 40 frequency. I assume that's good. F is 300 by 2 pi, right? Pi pi get cancel हो जाएगा, 2 pi get cancel. आया एंगल? यस, ना करो स्मॉल क्वेश्चन, एक एक का कैलकुलेट करो, एक्सेल कैलकुलेट करो, जेड आएगा बिकॉज दोनों कॉम्बिनेशन में कभी भी जेड ही आएगा। ओके, एंड फेज डिफरेंस के लिए इंपेडेंस ट्रायंगल हेल्प लेने का, पीक करंट आई नो, यू नो द फॉर्मूला फॉर आरएल सर्किट का पीक करंट फाइंड करना आ गया ना, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। हाँ सॉल्व करो, and whenever the voltage source is there, you can know omega, you can know E naught.
आ गया या चल एक एक एक्सेल 4. ओके 4 ohms yes Z impedance is 5. 5 ohms units पे बोलो Right. Tan phi is 57 degrees. 57 आना रहा Um, दो ही है tan, 37 53 is there. oh yeah, 53. Yeah. 53 degrees yeah I naught peak is 4. 4 unit rupees No, amperes. amperes yeah instantaneous current 4 sine 10t minus 53 degrees. yes correct Um, and voltage across the purely resistor is 12. 12 instantaneous voltage पूरा आएगा साइन आएगा 12 sine 10t minus 57 degrees. 57 you like 53 degrees. Yeah. yeah and instantaneous voltage across inductor 16 sine 10t minus 53 degrees plus pi by 2. pi by 2 is 90 right 90 Oh. minus 53 subtract करो 143 degrees. कितना 143. no No, minus, right? 37 37. 37 Yes. degrees श्रीराम किधर तक आया वाला till where you got Said the fifth one. which one Instantaneous current. instantaneous current ये वाला हाँ instantaneous current कितना है I told you right इधर I is equal to since this is a LR circuit finally it lags by 5 right so I equal to I naught sin जो भी फेज है उसका कॉपी करो 10t minus 5 lags voltage by 5 okay now I naught you know you got already substitute and 5 also 53 degrees you know पता पूरा आ गया ना आपको या तो कितना आएगा श्रीराम बोलो I is equal to I naught is how much you got 4 right 4 sin 10t minus 53t and voltage across the purely resistor I told you current is flowing this much right in a purely resistor mein current and voltage are in the same phase so VR is equal to VR naught sin same phase copy karo 10t minus 53 and you know how to find VR naught is I naught into R substitute and you'll get this one and इंडक्टर में फ्यूल इंडक्टर में करंट का फेज जो है वो वाला लीडिंग वोल्टेज विल लीड्स करंट पे पाई टू सो VL इज इक्वल टू VL नॉट साइन जो भी करंट का फेज वो कॉपी करो -53 प्लस पाई टू so pi by 2 is 90 90 minus 50 53 is 37 degrees and VL not you know I not into XL you got it substitute you'll get the answer चलो I करो the potential difference across the resistor is 160 ohms and across the inductor is 120 volts so 160 volts 120 volts okay if the effective current of the circuit is effective current means IRMS right IRMS they given as 10 ampere and these voltages are what is this voltages they given this voltage is nothing but VRMS right so these are VRMS okay calculate the total impedance of the circuit Z is telling to find since RMS पे दिया you can use the RMS current का use करके IRMS is equal to VRMS by Z okay. so from this Z आ जाएगा IRMS given VRMS find करते बस रुको और सात्विक बोलेगा करो सात्विक so combination में we will take the help of that starting diagram देखो VR current is like this right current is like this VR
RMS is this direction, and ऊपर कैसे था VL RMS. It may be peak also same diagram, RMS also, incidence also same diagram, right? And this is V RMS. Okay. Total voltage is angle. Now how to find VRMS directly? Net no parallelogram लगा के VRMS is equal to under root VL RMS square plus VR RMS square. वो solve करो, will get the VRMS. VRMS substitute किया तो will get the answer. बोलो. So 20. कौन सा Z? Yes. That's 20 ohms. Z is also ohms. तो जब अंडर रूट ये 120 होल स्क्वायर प्लस 160 होल स्क्वायर किया तो पूरा सॉल्व करने के बाद I got it. अब 200 आएगा. 200 बाई किया तो विल गेट 20 ohms इज आंसर. ठीक है, चलो अभी ऑप्शंस तो है. कॉइल मींस कभी भी उसके पास देखो, कॉइल हैज अक्रॉस द डीसी वोल्टेज सप्लाई ड्रॉस अ करंट व्हेन द अक्रॉस दिस मच same coil draws a current of 1 ampere. Self inductance of the coil. Coil means it has resistance and inductance. देखो coil means it has both resistance and inductance. Practical coil has some resistance, opposition will be there. First case में he applied only DC. Second case में he applied AC. Determine the self inductance means you have to find L. Inductance आने के लिए you can try to find XL. XL is omega L, right? Omega L is 2 pi FL. इधर से L आ जाएगा. Because frequency also मतलब our intention is to find XL.
देखो coil when connected with a 10 volts DC supply. So voltage they given as in DC में we are talking about. DC में voltage they given as 10 volts. It draws a current of 2 amperes. Okay, you tell me in DC में XL is how much? XL is how much? Omega L, right? Omega L. Omega is 2 pi FL. And you know frequency of the DC is 0. XL is 0. So from this way, what we can get, we will see. So from this, we know the Z is equal to under root R square plus XL square. So क्या होगा? इधर XL तो 0 है, मतलब Z is nothing but R only from this, right? And you know formula for I is equal to V by Z is nothing but R. Now from this R is equal to how much? V by I. So V is nothing but 10 by 2. So 5 ohms we got. देखो रेसिस्टेंस आने के लिए डीसी का कंडीशन गिवन, रेजिस्टेंस आ गया. हमारा इंटेंशन क्या है? एक्सेल फाइंड कर सकते हैं तो खत्म, विल गेट इंडक्टेंस. नो एसी का कंडीशन ले लो. एसी में व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन? व्हेन इज कनेक्टेड विद अक्रॉस द 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इज नथिंग बट वीआरएमएस. व्हाट आर द वोल्टेज दे गिवन? दैट इज आरएमएस. एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. AC supply of same coil draws current of IRMS. They can give it as 1 ampere. Determine the inductance of the coil. Pi को 3 ले लो बोले. Okay. From this, I think you can get Z also from this. We know that IRMS का formula क्या है? VRMS by Z. Z is equal to VRMS by RMS. So 10 by 1. 10 by 1 is 10 ohms. So Z भी आ गया. R भी मालूम है. You can find XL. Formula क्या है? Z is equal to under root R square plus XL square. Now find substitute and find XL. रूट में आएगा आंसर, सम रूट. So 510 power minus 2 by root 3. किसे एक्सेल? Yes, sir. एल यू टेलिंग? Yes. देखो Z का 10 ohms है, स्क्वेयरिंग है उससे 100 minus R square is 25, right? 25 under root is equal to XL. So XL is equal to root 75. Root 75 is 5 root 3. So XL you got. Now substitute here. XL equal to 2 pi FL. L find करो. XL is 5 root 3. रूट को निकालने के लिए Z square we are doing. Squaring on both sides. Z square. Z is 10, right? 10 square is 100. And R square को R is 5. 5 square किया तो 25. उधर लेके आए तो minus, right? A square को उधर लेके आए तो root. So XL is 5 root 3. Approximate answer check. Is it option A? Yes, correct. A answer. Now substitute here XL के जगह में that one. So इसमें थोड़ा calculation part बढ़ा है. That's it. So XL is 5 root 3 is equal to 2 pi. F is how much? 50 into L. And pi is 3 ले बोलो ना. 3 to the 6. So 5 root 3 by 6 into 50 is equal to L. So if you solve, you'll get the answer approximately 0.028. Henry. Inductance is Henry. Okay. Now these are the things in the LR circuit. Now क्या करेंगे? Next one क्या है? We're talking about RC circuit. RC circuit. Okay. Same method, same thing.
इसमें क्या होगा, सेम करंट क्या होगा, लीड होगा लैग होगा इसमें, बाय हाउ मच इट विल लीड, नाउ कैन यू गेस आर सर्किट में। करंट ये बोल रहे हैं सेम फेज, ये बोल रहे हैं करंट लीड्स वोल्टेज पे 5/2, बट फाइनली लीड ही होगा बट नॉट 5/2, इट इज 5, इट इज 5। ओके चलो नो इसका डायग्राम देखो। सो करंट करंट कितना आएगा, आंसर फॉर्मूला कितना आएगा फाइनली, आई नॉट साइन, जो भी फेज कॉपी करो, ओमेगा टी प्लस 5। करंट लीड होगा बट 5 में। ओके सो हियर करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, वी आर, एंड इसमें क्या होगा, करंट लीड्स वोल्टेज पे 5/2, so current is like this and voltage lags current by 5/2, voltage across capacitors है this one. Now if I draw the voltage, देखो same thing in RC कैसे, RL कैसे, कैसे ही देखो, करंट को I am taking a reference, voltage को I am taking VR, peak values में will write VR not directly, VR not, and VC not किधर से आया, नीचे आएगा VC not like this, and net voltage is V not is a net voltage and angle phi. Okay, now same thing, use the parallelogram law, because our intention is to get the impedance. आई तो आ गया डायरेक्टली phi बोल के, impedance क्या है, okay same thing by using parallelogram law, V naught square is equal to V R naught square plus V C naught square, I naught into R naught whole square plus C naught को क्या आएगा, I naught into XC whole square. So I naught square, if I take common, R naught square plus X square. So therefore V naught is equal to, root का तो I naught आ जाएगा, under root R naught square, R square, R naught क्यों, R को लिखें, okay, so R square plus X square, देखो सेम देख, XL square के जगह में XC आएगा, so therefore I naught is equal to V naught by under root R square plus X square, and this is also acting like impedance and we represent as Z. So therefore formula क्या यूज करेंगे, V naught by Z, and Z का formula is under root R square plus X square when they given RC circuit. And if peak values में write तो RMS also write, IRMS is equal to VRMS by Z, this is also right. Now I'll convert into the impedance triangle also. So this is R value, this is XC, and this is Z. This angle is phi. This is called impedance triangle. Impedance triangle. So impedance triangle will help to find the angle phi वगैरह में. Now from this, what is Z is equal to under root R square plus XC square, and tan phi कितना है, tan phi is equal to opposite by adjacent, so XC by R, tan phi. हाँ? तो सभी में एक बार लिखेंगे इसका, चलो इसमें लिखेंगे, देखो व्हाट इज द वोल्टेज द गिवन, दिस इज अ रेजिस्टर, कैपेसिटर and connected with a voltage source RC, V is equal to V naught sin omega t. Now tell me, if I given a voltage V is equal to V naught sin omega t, what is the current I got? Current leads voltage by phi, so I naught sin omega t plus phi, right? And I already know VR naught कितना होगा, I naught into R, V C naught is nothing but I naught into XC. Now current तो आ गया आपको. Now purely resistance के across देखेंगे,
voltage across resistance. Instantaneous voltage across resistance. So we are not sin. In resistance में क्या होगा? Voltage and current are in the same phase. So जो current का phase है वही phase उसमें copy paste हो जाएगा. So current का कितना था ऐसा ना? Sin omega t plus phi. We are not. We are not sin omega t plus phi. समझ में आ रहा है? ये प्यूरली रेसिस्टेंस में. प्यूरली कैपेसिटर में क्या होगा? वोल्टेज क्या करेगा? वोल्टेज लैग्स करंट पे पाई बाय 2. सो करंट का फेज कितना है उससे लैग करेगा पाई बाय 2. सो वी सी इज इक्वल टू वी सी नॉट साइन. सो करंट का जो फेज है वो कॉपी पेस्ट करो. ओमेगा टी प्लस 5 लैग्स करेगा ना माइनस पाई बाय 2. तो दिस इज आंसर्स. ये क्वेश्चन ये आगे तो आपको क्वेश्चन सी कैन एबल टू सॉल्व इजीली. ओके. एंड इधर भी लिख दो इंपेडेंस ट्रायंगल का. दिस आर, this is xc, this is z, and this is phi. So z is under root r square plus x square, and tan phi is opposite by adjacent. Impedance triangle will be useful to find angle. It will be useful. And from this, what is cos phi? Cos phi in this way. Cos phi is adjacent by hypotenuse. Adjacent is what? R by hypotenuse is z. देखो R by z. एंड इस cos phi को आपको आगे समझ में आएगा पावर फैक्टर बोलते हैं. पावर फैक्टर. cos phi is nothing but power factor. Sometimes they'll tell to find the power factor means R by Z, and Z is an under root R square plus XC square. चलो चलो मैं करो. कब बेटा सजक या हाँ 10 sin 10 power of 4t and 25 microfarad 3 ohms. This is a RC circuit. 10 power of 4t. सेम कैसे किया ऐसे ही करो सेम. एंगल 57 नहीं 53.
फिनिश्ड चल XC साथी को आप बोलो 4, कहते सत्य हाँ चल हाँ XC how much 4 ohms okay next बोलो that is 25. no wrong 5, under root 25 will be 5 हाँ Yes. then पूरा wrong हो जाएगा 53 degrees. क्या 30 Sir? 33 या 50, 53. 53 हाँ या I is 2. okay I naught is 2 sine to 10 Z का power 4. 25 नहीं Z का 25 डाल के पूरा सब कुछ कट के कैसे हो गया No, 78.5 only. ओके हाँ Under this आई that, uh, 5 is 53 degrees. ओके Yes. So I naught instance is 2 sine 10 power 4 t plus 53 degrees. यस BR is 6 sine 10 power 4 t plus 53 degrees. ओके VC is 8 sine 10 power 4 t minus 37 degrees. यस वेरी गुड सुपर आया हमें तो इजी है नाउ वी लेफ्ट विथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे पावर के बारे में लर्न करेंगे पावर का पूरा देन RLC रेजोनेंस सो 2 क्लासेस में मैक्सिमम विल ट्राई टू फिनिश फास्टर वे में नहीं तो 3 क्लास हो जाएगा पता नहीं